Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualikum. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन बर्गर। बहुत ही ईजी रेसिपी है। मैंने तो उस दिन आपके साथ शेयर किया था शवारमा बनाते हुए चिकन कैसे तैयार की थी, वही बची हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं मानूर को लंच बॉक्स से चिकन बर्गर दूँ। और सेम शवारमा चिकन की रेसिपी है, वो आपके साथ मैंने शेयर की हुई थी। उसी चिकन को मैंने बर्गर बन जो मिलते हैं इनमें ऐड किया और अच्छा सा लंच बॉक्स मानूर के लिए रेडी हो गया था। मैंने मन को तवे में हल्का सा घी डाल के थोड़ा सा नरम कर लिया था, फ्राई भी कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर चिकन मायोनीज ऐड किया, फिर चिकन डाला। तो एक छोटी बच्ची है तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैंने रखा। तो एक बार जो चीज़ आप बनाते हो वो 3-4 चीज़ों में ऐड हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा बनाने के बाद में उसको ज़ाया कर दो। मायोनीज़ आपके बर्गर में भी यूज़ हो जाता है, चिप्स बनाते हैं तो उनमें भी यूज़ हो जाता है, शवारमे में भी, और आज मैं बर्गर में भी यूज़ कर रही हूँ। चिकन है तो उसकी भी वही सेम रेसिपी है, वही मैंने ऐड किया। और ये सोया सॉस सॉरी वो डाल रही हूँ मैं, पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी और झटपट से हमारा चिकन बर्गर रेडी हो जाता है। इसमें मैं मम्मियों भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मानो उन्हें पसंद, लेकिन बाकी हम तो खाएंगे, हम तो ऐड करेंगे। ये देखें, उसी ऑयल वाले तवे पे मैंने इनको 2 सेकंड के लिए रखा है ताकि अच्छी से जल्द हो जाए मायोनीज भी और पिज़्ज़ा सॉस भी आपस में। और ये मानो लंच बॉक्स रेडी है लंच में डाल के देने के लिए। मानो स्कूल के लिए भी रेडी हो गई है। बहुत ही ईजी रेसिपी थी, आप भी जरूर ट्राई करें चिकन बर्गर की। कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। एक बार बंदा चीज़ बना ले तो उसको 2-3 चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़ाया हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिमाग लड़ाना पड़ता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट इसी रेसिपी और ब्लॉग के साथ मैं आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ सपोर्ट किया करें।